सो आज की जो हमारी टॉपिक है स्पेसिफिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी टोल्ड लाइक टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अपन अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। भाई हाँ, सो जस्ट वेट फॉर 2 minutes। या ओके, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक, तो हेडिंग डालो अल्टरनेटिंग करंट। आज सुबह की मॉर्निंग मॉर्निंग टॉपिक। वो सुबह सुबह रेडियो जॉकी नहीं आते हैं, रेडियो वाले। तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा। मुन्ना भाई था या कौन सा था, संजय दत्त की कोई मूवी थी। बट यहाँ पे विद्या बालन की आवाज नहीं है, बल्कि मेरी आवाज है ना। तो सुबह सुबह पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब क्वेश्चन क्या है कि पहली बात कि ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या और डायरेक्ट करंट है क्या। दो तरह के करंट होते हैं सबसे पहली बात। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। सो जो मतलब बोला जाता है कि विच एवर करंट और दोज करंट which periodically changes its direction, which periodically changes its direction is called as alternating current। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, मान लो जैसे दो तीन एग्जांपल अपन पकड़ेंगे, दो तीन तरह के करंट्स की। ओके, कोई भी करंट जो कि पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये तो तुमने देखा ही होगा, ये हरदम यूटिलाइज हुआ है, साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, साइन वेव्स जो होते हैं, दिस इज माय आई, दिस इज माय टाइम पीरियड टी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक करंट इस तरह से है, एक करंट इस तरह से, एक करंट इस तरह से, मतलब these are varying, they are not just direct currents। Okay, they are varying in nature। Okay, so this is an also example of alternating current which are not the direct current but the varying currents। Okay, एक और एग्जांपल हो सकता है, ठीक, ये तुमने नहीं देखा होगा, लाइक लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं करंट्स को। ओके ठीक, this is an also example of a alternating current। So there can be many various example, whichever current which varies we call it as, which varies periodically we call it as alternating current। जो भी करंट पीरियोडिक वे में वारी करे, मतलब एक टाइम के बाद सेल्फ रिपीट करे खुद को, उसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा एग्जांपल है, सेकंड पॉइंट, दूसरा टाइप का करंट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक, क्वेश्चन आता है कि सर ये डायरेक्ट करंट है क्या। तो द करंट इन विच direction remains same, in which direction remains same, we call it as direct current। are you able to get me or not। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज, ठीक, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, ये क्या है, कौन सी करंट है, डायरेक्ट करंट। वो टाइम के साथ कभी भी वैरी नहीं कर रही। दूसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट करंट। ओके, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई डिकेइंग सिंगल डायरेक्शन करंट भी है, तो दिस इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ अ direct current। are you able to get me or not। so same side direction means there is no positive and negative oscillation, then we call it as
डायरेक्ट करंट। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? अगर मतलब वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हरदम है तो वो डायरेक्ट करंट है। जब भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वैरी कर रहा है, जिसकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव वेव के बीच में वैरी करे, उसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लेट अस टॉक। अभी अल्टरनेटिंग करंट है तो हम सबसे सिंपल वाली अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ते हैं, विच वी कॉल इट एज द फर्स्ट वन, जिसका नाम है साइनसोइडल ग्राफ्स। ओके, तो लेट सपोज इफ यू टेक एनी एसी सोर्स, हम बहुत ही सिंपल वाले को पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? बताओ, यहाँ तक कुछ दिक्कत? कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक थ्रू दिस। हम्म हम्म तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ एसी सोर्स। ठीक, तो मान लेते हैं सबसे पहले, मान लो कोई तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया। ठीक, और इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, मान लो तुमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल लेके प्लेस कर दिया। अब क्या किया तुमने, इसको, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी फाई एंगल से तुम गोल गोल घुमाने लगे। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी फाई एंगल के साथ गोल गोल घुमाया। ठीक, तो मान लेते हैं, लेट सपोज एट एनी रैंडम टाइम टी, दिस पर्टिकुलर कॉइल, मान लो कि ये पर्टिकुलर जो कॉइल है तुम्हारा, वो कुछ एंगल थीटा बना रहा था विद द एक्सिस। सो लेट सपोज द रेक्टेंगुलर कॉइल rotates angle theta in time t। तो एक बार बताओ, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b है और इस रेक्टेंगुलर पोल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्निंग्स है वो है n। ठीक है, n भी द नंबर ऑफ टर्निंग्स, देन सिंपल सी बात है, जो फ्लक्स डेवलप होगा थ्रू द कॉइल is how much? It is exactly equal to nba, isn't it? But as the angle is changing all the time, so at any random time t, the flux will be given as NBA cos theta, because the magnetic field and area will make some angle theta with themselves. Are you able to get me or not? But theta is given as omega t. Now, इसके वजह से, due to this presence of flux which is dependent upon time, we know that we can get EMF also out of that। हमें EMF मिल जाएगा। EMF we give it as minus of d phi by dt। तो ध्यान से देखो, अगर हमने इसको d phi by dt किया तो क्या आएगा? It will be coming as minus of NBA cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो, जो EMF डेवलप हुई इनसाइड दिस कॉइल ड्यू टू इट्स ओन रोटेशन इज NBA ओमेगा, 1 minute, NBA omega into sin omega t। Are you able to get me or not? और इसी NBA omega को हम बोलते हैं the initial voltage constant which is given as V0, और total EMF को हम represent करते हैं, the EMF which is generated is given as V is equal to V0 sin omega t, and this is what we call it as alternating voltage। But see that alternating voltage is generated inside that rectangular coil which is rotating। Are you able to get me or not? Is this clear or not? अरे कुछ तो रिप्लाई कर दो। चलो, so look over here। Are you guys over here? Okay, so now look over here, let us move on to next point। Now as we got to know our voltage, now we can also be aware of our current now inside that। Let's suppose this loop has a resistance R।
Okay, so I must be, according to Ohm's law, I is V by R, isn't it? Where V is given as, we know that it is V naught sine omega t divided by, sorry, sine omega t divided by R. So इस V naught by R को बोला गया I naught into sine omega t. Remember that where I naught is given as, in actual terms it is NBA omega divided by resistance R, where N is number of coils, N is number of turns of coil, B is magnetic field, A is area of rectangular loop, and omega is angular velocity of rotation of coil. Is this clear or not? So this is how our current, alternating current you can say, or alternating voltage is generated. Now let us generalize these terms. If we write I is equal to I naught omega t, I naught sine omega t, and V is equal to V naught sine omega t. These are called as alternating voltage and alternating currents, which are generated due to the rotating coil, and where I naught is this value, we know that, and V naught is just NBA omega. Okay. Now let us give this terminologies. I naught is called as peak current. Okay, the maximum value of current, or you can say it is current amplitude. Okay, we know it by two terms. Okay. Second point is V naught is similarly called as peak voltage, the maximum voltage. Okay, comma voltage amplitude. So if someone asks you that what is the maximum value of current or maximum value of voltage, so I max is exactly equal to I naught, which is exactly equal to NBA omega by R, while Vmax, remember that Vmax is not my Vrms, it is less than that. Okay, so sorry, it is more than that. Vmax is equal to V naught, which is given as NBA omega. Remember that. So these are our maximum and minimum values for any kind of alternating current. Are you able to get me or not? Now the question arises that we got to know about maximum and minimum. We got to know how the alternating current is generated. But actually, when it is varying, you try to see, let's suppose, if I see this alternating current, then basically it is varying in nature. Means sometimes it is maximum, sometimes it is minimum. Like it is going like this way, isn't it? So sometimes it is maximum. See that at I'll mark the time also. Let's suppose if the time is divided, one period is given as t. So then this is t by 4. This is t by 2. This is 3t by 4. And this is t. So you can see that at every time I have a different value of alternating current. Now, if I have different value, then how come I can know that what is the total amount of current in one time period? So to find that, we use the current concept of average current or average voltage, which we denote it as I average or V average. Now, for any kind of average value on time, for any quantity x,
मान लो अगर किसी भी क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ वैरी कर रही हो साइनसोइडल वेव में, किसी भी वे में, अगर तुम उसकी एवरेज निकालना चाहते हो तो एक्स एवरेज इज गिवन एज इंटीग्रल x dependent upon time or any variable dt from t initial to t final divided by integral whatever quantity you are following gt from t initial to t final. So similarly, let's suppose if I want to find the current average, so it must be equal to 0 to time period t in one time period I naught sine omega t. Let's suppose if there is a phase difference, I call it as phi naught or phi into dt divided by integral dt from 0 to t. When you solve this equation, when you are going to solve this equation, what you are going to find out, you want so you can do the integration over here. I'll just directly tell you the results. Okay. So when you do this integration, you will find out that this value is appearing to be equal to 0. How much it will come as? Directly exactly equal to 0. Is that clear or not? Any value, remember that, means any value which you calculate, means you just remember one formula, that integral in 0 to 2 pi sine theta, whatever is that, d theta, it is always 0. Similarly, 0 to 2 pi cos theta d theta is also equal to how much? 0. But the point arises that what happens in half time? Let us check for half time. Okay, what happens to these values for half time? Basically, half time means that you are moving from theta is equal to 0, theta is going from 0 to pi by 2, isn't it? Sorry, 0 to pi, not pi by 2, 0 to pi. So let's suppose if I take the integration of 0 to pi sine theta d theta. So sine theta is minus cos theta 0 to pi, which will appear as minus cos pi minus of cos 0. So cos pi is minus 1, cos 0 is uh, also 1. So this comes as 2. That's an interesting result over here. Similarly, if you calculate integral 0 to pi cos theta d theta, it is equal to sine theta, and that is 0 to pi. So if we calculate, 1 minute, let me check. Cos pi, cos pi is minus 1, minus of 0. हाँ ठीक है. So when you calculate that in first time interval, it is going to come as sine pi minus sine 0, which is 0. Is that clear or not? So for cos theta kind of functions, it is in terms of pi by 4, which gives the positive value. Otherwise, in sine theta term, you see that this is why there was a reason. Remember that this is why there was a reason that why to include particular sine theta over here, sine graph over here, because you see that in half time period, in from here to here, the graph is positive and there is a positive value or average value of that, and this is why during the half time I have the sine graph which has a average value. So this is why we say that, मतलब हम बोलते हैं क्या कि भाई मान लेते हैं कि sin थीटा की सर अगर 0 to pi, मतलब तुम ही खुद सोचो कि बालक मेरी बात समझ में आ रही है, तुम कुछ रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा. cos pi will be 0. कृति आई विल किल यू. cos pi is minus 1, इसलिए बोलता हूँ माइक ऑन करके रखो. Okay, so remember that cos pi is always equal to how much? 1 minute. So cos pi is always equal to minus 1 एक्चुअली. ठीक है, cos की ग्राफ इस तरह से होती है, 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0 और पाई पे -1. ठीक है,
तो अगर मान लो -1 हो गया ये 1 तो -2, सो देयरफॉर इसीलिए बोला गया कि मान लो अगर हम आई एवरेज निकालें हाफ टाइम पीरियड में, इन हाफ टाइम, so that is integral 0 to t half uh, I naught sine omega t. Let's suppose I am considering the phase difference to be 0, dt divided by 0 to t by 2 dt. Is that clear or not? So when you do that half time calculation, what you are going to get? Simple. Sine omega t is 2, so it gives us I naught. Let's suppose if I do the integration of sine omega t, how much I'll be left with? It will be I naught into omega, sorry, I naught by omega sine cos omega t, ठीक, माइनस आएगा 0 to t by 2, और ये अगर हम करें तो ये आएगा 2 by t, isn't it? तो ध्यान से देखो, जब तुम कैलकुलेशन करोगे इसकी वैल्यू आएगी cos ओमेगा t, जब 0 to t by 2 कर लो आंसर सेम आएगा, कितना आएगा? We did it right now, it is equal to 2, so this is going to come as, it is going to come as 4 I naught by omega t, that's your answer, ठीक है? और ओमेगा होता है 2 pi by t, तो कैंसिल, so this is twice I naught by pi is your I average in the half time. Are you able to get me or not? So we got to know what happens for I average, ठीक है? I average in full time, okay, it is exactly equal to 0, but I average in half time, बालक तुम्हारी कुछ रिप्लाई करोगे? I average in half time is exactly equal to कितना आया? Twice I naught by pi, ठीक है? Okay, is this clear? Similarly, V average in full time, it is 0, while V average in half time, it is twice V naught by pi. I think this is clear. ठीक है? So you just try this. I'll give one question for based upon this. Let's suppose बोल रहा है कि if I is following I naught e to the power of minus t by tau, then find its average value. Find its I average between t is equal to 0 to t is equal to 5 tau. Tell me what's the answer.
Do it. Find I average between. So I average formula is T1 to T2 I dt divided by integral dt T1 to T2. So this is going to come as T1 to T2 I की वैल्यू दी गई है तुम्हारे पास I नॉट e to the power of minus t by tau dt divided by integral. अच्छा T1 और T2 भी दिया हुआ है, सॉरी T initial और T final mentioned already, which is 0 to 5 tau. Similarly, this is 0 to 5 tau. I naught dt is, I'll do the integration. Okay, so this will be left as I naught e to the power of minus t by tau is इसका इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा डायरेक्टली राइट माइनस e to the power of integral. I'll tell you the formula that integral e to the power of ax dx is e to the power of ax divided by a. Remember that. Similarly, like sine ax dx, whenever there is a constant multiplied over there, sine ax divided by a, sorry, minus of cos ax divided by a. Similarly, cos ax dx, it is minus of sorry, plus sine ax by a. So you have to follow these relations to find out this. Similarly, if I follow these relations over here, e to the power of minus of t by tau, and this will be minus 1 by tau then, because constant is 1 by tau, from 0 to 5 tau divided by 5 tau minus 0. So which is going to be just 5 tau. So similarly, I'll be left with now, this tau goes up. So I naught minus I naught tau by 5 tau. Okay. E to the power of ये आएगा e to the power of minus 5 minus of e to the power of 0. So this can be written as easily. This implies I average is nothing but our it is equal to I naught by 5 tau tau got cancelled, 1 minus e to the power of minus 5. That's your answer of I average. I think this is clear. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में. This is time axis, this is current, okay. Okay, now look over here. बोल रहा है कि a current is varying like this fashion. Okay, a current is perfectly varying like in this fashion. Not it. Means this is also a kind of alternating current. You can't say this is not an alternating current because there is a variation of current in the x-axis minus of minus of y-axis and x-axis. Okay. The point is very simple. If it varies like this way, if it is varying like this way, okay, then find the I average between half time.
देन फाइंड द आई एवरेज बिटवीन हाफ टाइम. मैं मेंशन कर देता हूँ टाइम वाला पीरियड. दिस इज t by 2, this is t, this is 3t by 4, this is 1 minute, 3t by 2, not 4, 3t by 2, this is twice t. Not at all. So it is varying like this way, means t half, then t, then 3t by 2, and then twice t. The question is find its particular average value of current between 0 to t half, where this is I naught and this is minus of I naught. Tell me fast. Tell me what's the answer. Okay, let us understand how to do it. First of all, जैसे कि यहाँ पे हमें तो साइन या इक्वेशन दिया हुआ है, या पहले से हमने साइन का इक्वेशन निकाला हुआ है. यहाँ पर ये ग्राफ के हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा करंट का. तो करंट है, पहले तो ये देखो कौन सी ग्राफ है. इट्स एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन हरदम होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक. अब ध्यान से देखें तो y की वैल्यू में y एक्सिस करंट I से वारी कर रहा है. I इज इक्वल टू m निकालना होगा. x एक्सिस टाइम के साथ वारी कर रहा है, तो टाइम t प्लस c. c क्या होता है? तो c इज द इंटरसेप्ट एट t इज इक्वल टू 0. कितना वैल्यू वो y एक्सिस पे ज्यादा है, तो इट इज माइनस ऑफ I नॉट. बट व्हाट अबाउट m? वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. हाउ टू फाइंड द m ओवर हियर? तो m की जो वैल्यू होती है, स्लोप, m को बोला जाता है स्लोप. इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू tan थीटा ऑफ एनी ग्राफ. ठीक है. तो कोई भी तुम दो पॉइंट पकड़ लो, मान लो जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा. ठीक. अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकाल दूँ तो दिस इज माई थीटा विद द एक्स एक्सिस. ठीक है ना. तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा I नॉट, और बेस कितना हो गया तुम्हारा t बाई 2. t बाई 2. तो ध्यान से देखो क्या है, ट्वाइस I नॉट, sorry, twice I naught divided by t. This is my slope over here. ठीक है. तो ध्यान से देखो, इसको पुट कर दो. twice I naught by capital T. That's your particular equation. So this, ये मेरा इक्वेशन हो गया तुम्हारा क्या चीज का? करंट का. So I is varying like, मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ. I is equal to I naught 2t by capital T
माइनस वन। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ करंट ओवर हियर। जो तुम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देखते हो, यही सेम चीज यहाँ पर भी है, बट ये वैरी कैसे कर रहा है? I इज इक्वल टू आई नॉट टू टी बाई कैपिटल टी माइनस वन। और ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट है। देखो यहाँ पे कोई साइन वगैरह नहीं है, इस ग्राफ में कोई भी साइन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिंग करंट, गॉट और नॉट? तो ध्यान से देखा जाए, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी आई एवरेज हमें निकालनी है between half time. So 0 to t by 2 only. So this will be 0 to t by 2 I naught twice t by capital T minus 1 dt divided by 0 to t by 2 integral dt. तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? I naught कॉमन twice capital T square by t 0 to t by 2 माइनस dt, तो इसका सिर्फ t हो जाएगा, t फ्रॉम 0 टू t बाई 2। इसको dt, तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली t ऊपर में 2। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 4 ट्वाइस आई नॉट बाई टी, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 4 माइनस टी बाई 2। तो ये टी कैंसिल कैंसिल, और देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू t बाई टू और t बाई टू मिलके क्या हो जा रही है? 0। तो आई एवरेज आया इसका फ्रॉम 0 टू t बाई टू, इट इज गोइंग टू कम एज हाउ मच? 0। कितना आ रहा है? 0। लेकिन 0 तो आना नहीं चाहिए, एक मिनट, लेट मी चेक। y इज इक्वल टू mx प्लस c माइनस आई नॉट टू t बाई टी नहीं सही, चलो करेक्ट ओनली, ठीक है। So this is your equation. This is how you are going to solve whenever you are going to get any kind of question. Find the average value. उसकी equation बनाओ, equation बनाने के बाद direct तुम्हें आंसर मिल जाएगा easily, easy way. Okay. Remember that whenever you are going to get a graph, just make its equation. ठीक है ना? कभी भी equation बनाओगे, आंसर खुद पे खुद मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिलता तो फिर हम बाद में सोचेंगे। Is that clear or not? और एक टेक्निक बता देता हूँ, कभी भी अगर कंफ्यूजन लगे कि किसी अगर आप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो लुक ओवर देयर। अगर राइट हैंड साइड के साथ एंगल बने एक्यूट, तो उसके लिए स्लोप हरदम पॉजिटिव होता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बने एक्यूट, तो सॉरी ऑब्ट्यूज, तो उसके लिए स्लोप हरदम नेगेटिव होता है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे, acute and obtuse. If the theta is acute, the slope is positive. If the theta is obtuse, the slope is negative. Simple and as clear as it is. Is that clear? Now move on to next point, which we call it as RMS current. So root mean square current, which we call it as IRMS, and voltage VRMS। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर मान लो IRMS कोई किसी भी वैल्यू का, अगर कोई भी क्वांटिटी है जिसकी RMS वैल्यू निकालनी है फॉर एनी क्वांटिटी x, फर्स्ट वी आर राइटिंग फॉर generalized case for any quantity x, ठीक, x RMS is given as simple root over x square, I'll write it, integral, let me write it in a big way, root over integral x square dt divided by integral dt, but dt varies from where t, this equation varies from t initial to t final। तो सिमिलरली अगर मान लो IRMS निकालना है, तो सिंपल IRMS की वैल्यू क्या होगी? रूट अंडर इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई जस्ट डी टी। सिमिलरली VRMS रूट अंडर इंटीग्रल वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई
वी डी टी, सॉरी इंटीग्रल डी टी। तो अपन एक ट्रिक फिर से देखेंगे कि अगर हम फाई की वैल्यू, वी नो दैट आवर करंट एंड वोल्टेज इक्वेशंस वर गिवन एज, हमने क्या इक्वेशन रखा था कि सर आई की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें वी नॉट और आई नॉट पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये साइन ओमेगा टी के ऊपर जरूर असर होगा। सो लेट अस थिंक अबाउट दैट। सो मैं एक फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ, फ्रॉम फॉर हाफ टाइम 0 to for full time 0 to 2, sine square theta d theta is simply just 1 by 2. Remember that it is exactly equal to 1 by 2. Similarly 0 to t by 2, अगर तुम सॉरी 0 to t cos square theta अगर निकालोगे d थीटा, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आती है 1 by 2। तो मतलब कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन लो और उसका अगर हम एवरेज निकालें फ्रॉम 0 to t by 2, तो दैट इज 0 to t फुल टाइम के लिए, तो वो वैल्यू होती है 1/2। ठीक, सिमिलरली हाफ टाइम का एक कैलकुलेशन में कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर मान लो 0 to हाफ टाइम मतलब हो गया तुम्हारा पाई। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के बारे में बात करूँ, यहाँ 0 to t मतलब 2 पाई। ओके, दैट इज माई फुल टाइम, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ आवर फुल टाइम, दिस इज हाफ टाइम कैलकुलेशन। सो साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? तो सिंपल, वी कैन राइट इट एज 0 to पाई, इसको हम लिखते हैं कैसे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। सो दिस बिकम्स 0 to पाई 1/2 डी थीटा माइनस 0 to पाई cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ध्यान से देखो, तो इक्वेशन आता है दिस दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगा पाई/2 माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 विच इज वेरिंग फ्रॉम 0 to पाई। तो ध्यान से देखो, वन सेकेंड, सिर्फ आंसर आएगा ये पाई/2। तो याद रखना, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिए, इफ आई एम टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हाफ टाइम में 1 मिनट, पाई/2, हाँ। सो फॉर 0 to पाई साइन 1 मिनट T1 to T2, हाँ। सो it is going to come as sin square theta d theta, it is exactly equal to how much, pi/2। are you able to get me or not, guys? Is this clear? Similarly you can do for cos square theta, you just need to change, this will become 1 plus cos 2 theta by 2। okay, तो once again उसका भी आंसर सही सेम ही आता है, 0 to पाई cos square theta d theta is still same, it is also pi/2। are you able to get me or not? ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसी चीज का, 1 मिनट, इसको पाई के टर्म्स में लिख लेते हैं, 1/2 नहीं, इसको अगर हम पाई के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या आता है, अगर मान लो मैंने थीटा थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किया, 0 to 2 पाई, और इसको भी 0 to 2 पाई। सो रिप्लेस, सी ये तो वैल्यू हरदम जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि 2 पाई का कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना? हरदम तुम जब भी निकालोगे तो ये आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो। तो ये क्वांटिटी हरदम जीरो, तो यहाँ पे 2 पाई/2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आंसर, सिर्फ और सिर्फ पाई के बराबर आएगा। जिसके बराबर आएगा पाई। तो लुक ओवर हियर, इफ आई वांट टू राइट IRMS for full time, so this is integral, 1 minute, root over, okay, रूट ओवर आई स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, I0 स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा बाहर, 0 to
हमें टाइम पे लेना है तो 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to t, ये हो गया तुम्हारा dt, सिर्फ dt। आर एबल टू गेट मी और नॉट? देखो यही होगा ना रिलेशन। तो अगर हम हाफ टाइम का करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यह आएगा आई नॉट स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर तुमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी पुट किया तो एक एक मिनट, लेट मी चेक मंथ्स। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इट विल बी, इफ आई राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इट विल बी थीटा 1 माइनस कॉस, इट विल बी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना? इसी तरह से टर्म आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखो, अपने पास टर्म खुद पे खुद आ जा रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो तुम जब भी थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे, ये खुद पे खुद टर्म तुम्हें मिलते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुआ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एनी वैल्यू यू पुट इट, यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, और उसके हिसाब से आंसर्स मिलते जाएंगे, ओके। और ध्यान से देखो, तो अपन ने, सर ये सिंपल सी बात है, अपन ने आई एवरेज डेवलप किया, वी एवरेज डेवलप किया, आई स्क्वायर वाले टर्म में थोड़े से डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले साइन ओमेगा टी होता था, अभी क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। और पहले कॉस ओमेगा टी होता था, अभी क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर हम आई नॉट स्क्वायर ये डिवाइड बाई टी हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी इज सिंपल, दिस टर्म इज जस्ट टी रूट ओवर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बस, ठीक। तो ध्यान से देखा जाए सर, तो ये आएगा इक्वेशन रूट ओवर, 1 मिनट, आई नॉट स्क्वायर टी होता है तुम्हारा, इफ आई राइट, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना? टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें टी लिखना है, तो इट इज 2 पाई into omega, right or not? This is my time period t, okay? Is this clear or not? Integral 0 to t हो गया 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। Are you able to get me or not? Is this clear or not? तो when you solve this, क्या आएगा, सिंपल, अभी तुमने डिराइव किया सर, फुल टाइम पे जो वैल्यू आती है वो आती है ओमेगा पाई, और ओमेगा है तो ओमेगा से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस विल कम एज रूट अंडर ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई, and this will come as pi by omega. You solve it, you'll get the same thing. Omega omega cancel. So your value IRMS for full time is exactly equal to I naught divided by root 2. Similarly, VRMS निकालोगे for full time, it is V naught by root 2. ठीक, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूले को प्रोसीजर में लाना है, ठीक। अगर हम हाफ टाइम फॉलो करते हैं तो उसके लिए आता है पाई बाई 2, अगर फुल टाइम फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए उसके बाद उसके पास जो वैल्यू आती है वो 2 पाई बाई सिंपल पाई की वैल्यू के बराबर आती है। सो यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर, जैसे यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि सर कैसे आपने 0 to 2 पाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पाई बाई ओमेगा लिखा, यू डू इट, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से वही कन्वर्ट करो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू सेम ही आएगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? बिकॉज 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से,
अगर हम वन साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम लिखते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और ये इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाती है इंटीग्रेशन के बाद, तो बचेगा क्या 1/2 × 2 पाई बाई ओमेगा। तो ध्यान से करो 2 कैंसिल और बचा क्या पाई बाई ओमेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? I think this is perfectly clear. So similarly, this is for full time. The question is you have to do it for half time. So if I find IRMS for half time or IRMS, VRMS for half time, that's your task to do. Okay. I think till this we are clear. तो कल अपन LCR सर्किट लेके बैठेंगे, LC और RC सर्किट या LC सर्किट, and then we'll move ahead with this. Is this clear or not? Okay.